The CBD Roadmap. Aisha Khan. Published January 1, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. The Convention on Biological Diversity was opened for signature in 1992 at the Earth Summit in Rio, and came into force in December 1993. The CBD is an international treaty for the conservation of biodiversity, the sustainable use of the components of biodiversity and the equitable sharing of benefits derived from the use of genetic resources. The Cartagena Protocol on Biosafety and the Nagoya Protocol on access and benefit sharing are supplementary agreements to it. Unlike the hype surrounding the annual Conference of Parties on Climate Change, the CBD, taking place every 2 years, hasn't commanded the same attention from governments, civil society, or media previously. But, close links between the two are now increasing pressure to recognize the critical nexus, and working in tandem to achieve targets by 2050. The CBD concluded its negotiations last month in Montreal, providing world leaders with a once-in-a-decade opportunity to land a global deal for nature. The ambitious action plan was boosted by the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change that linked restoration of ecosystems to conservation of biodiversity in building resilience and securing food security. The outcome of the Global Biodiversity Framework, GBF, will have a direct impact on national plans, commitments, and public funding for nature. It will also influence climate strategies, guide investments, and provide accountable targets for the public and private sectors. A global deal for nature can be achieved. The GBF covers many issues with a mission to halt and reverse biodiversity loss by 2030 and to live in harmony with nature by 2050. To this end, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, bound together through agreements on finance, implementation and monitoring, and enhanced credibility, is a landmark deal. It is a step forward in translating obligations under the CBD into action. Of significance is the agreement reached to mobilize $200 billion from all sources, domestic and international, per year by 2030, and to increase international flows, including official development assistance, to at least $20 billion per year by 2025, and at least $30 billion per year by 2030. This commitment represents a tripling in funds compared to the previous framework. It is also significant that international financial flows will come from developed countries and states that voluntarily assume obligations of developed country parties. GBF's resource mobilization decision includes a call for financial system reform, including invitations to MDBs and IFIs to align their portfolios and financial flows with the Convention and GBF by 2030 to increase finance for biodiversity and consider partnering with the new Global Biodiversity Fund. The agreement to create this new fund under the Global Environment Facility will be subject to a sunset clause and will lapse in 2030 unless parties to the Convention agree to create space to discuss the need for a new standalone fund to support the CBD in future. Under the 2030 action targets for operationalizing the vision and mission, it will be important to work actively towards achieving key targets. These include spatial planning, ecosystem restoration, protecting 30 pc of land ecosystems and 30 pc in marine environment, halting human-induced extinction risks, reducing climate change impact on biodiversity and eliminating, phasing out or reforming incentives and subsidies harmful to biodiversity, among others. The implementation and monitoring framework of the agreement sets up a timetable for actions which require revising targets for national biodiversity strategies and action plans, and setting national targets with standard templates by COP16, 2, submitting national reports, 2026 to 2029, 3, conducting global reviews of collective progress at COP17 and COP19, 4, voluntary ratcheting up by countries after reviewing global progress. For Pakistan, it is important to align national biodiversity strategies, action plans and commitments with GBF requirements ahead of COP16. The government also needs to take urgent action at the domestic level to adopt laws to implement the GBF.
The implementation plan should include action to take forward Target 15, which requires legal, administrative, or policy measures to encourage or enable businesses to disclose their risks, dependencies, and impacts on nature. Developing a national biodiversity finance plan that enables the government to mobilize resources to support GBF implementation, as well as initiatives for standard-setting bodies on nature-related disclosures and transition plans to align work with GBF outcomes will help. While the COP15 outcomes provide a good implementation framework and a step forward from Aichi, much will depend on sustained political attention and mobilization of resources. Integrating the outcomes of COP15 into COP28 and holding annual CBD meetings can enhance delivery on the Paris Agreement. The writer is Chief Executive of the Civil Society Coalition for Climate Change. Published in Dawn, January 1, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. हयातियाती तनव्वुर से मुताल्लिक कन्वेंशन 1992 में रियो में अर्थ समिट में दस्तखत के लिए खोला गया था और दिसंबर 1993 में नाफिज अमल हुआ था। CBD हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़, हयातियाती तनव्वुर के अज्जा के पायदार इस्तेमाल और जीनियाती वसाइल के इस्तेमाल से हासिल होने वाले फ़वाइद के मुनसिफ़ाना इश्तिराक के लिए एक बैन अल-अक़वामी मुआहदा है। बायोसेफ्टी पर कार्टाजीना प्रोटोकॉल और रसाई और बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल इसके ज़िमनी मुआहदे हैं। अब हुआ की तब्दीली पर पार्टियों की सालाना कॉन्फ्रेंस के अर्द गिर्द हाइट के बरक्स CBD हर 2 साल में होता है। इससे पहले हुकूमतों, सिविल सोसाइटी या मीडिया की तरफ से इसी तरह की तवज्जो का हुक्म नहीं दिया है। लेकिन दोनों के दरमियान करीबी रवाबित अब अहम गठजोड़ को तस्लीम करने के लिए दबाव में इजाफा कर रहे हैं और 2050 तक अहदाफ को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। CBD ने गुज़िश्ता माह मॉन्ट्रियल में अपने मुज़ाकरात का इख्तिताम किया, आलमी रहनुमाओं को एक दहाई में एक बार फितरत के लिए एक आलमी मुआहदे को ज़मीन करने का मौका फराहम किया। इस मातोइकानकशी एक्शन प्लान को आब हुआ की तब्दीली से मुताल्लिक बैन अल हुकूमती पैनल के नताइज से तक़वियत मिली, जिसने माहौलियाती निज़ाम की बहाली को लचक पैदा करने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को महफूज बनाने में हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक किया। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF के नताइज का बराह रास्त असर कौमी मंसूबों, वादों और फितरत के लिए अवामी माली एआनत पर पड़ेगा। ये आब हुआ की हिकमत अमली पर भी असरअंदाज होगा, सरमायाकारी की रहनुमाई करेगा और अवामी और निजी शुबों के लिए जवाबदेह अहदाफ फराहम करेगा। फितरत के लिए एक आलमी मुआहिदा हासिल किया जा सकता है। GBF 2030 तक हयातियाती तनव्वुर के नुकसान को रोकने और रिवर्स करने और 2050 तक फितरत के साथ हम आहंगी में रहने के मिशन के साथ बहुत से मामलात का अहाता करता है। इस मकसद के लिए कुनमंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क मालियात, अमल दरामद और निगरानी और बेहतर साख से मुताल्लिक मुआहदों के जरिए एक साथ जुड़ा हुआ है। ये एक तारीखी मुआहदा है। ये CBD के तहत जिम्मेदारियों को अमली जामा पहनाने में एक कदम आगे है। 2030 तक हर साल तमाम ज़राए, मुल्की और बैन अल-अक़वामी से $200 अरब जमा करने का मुआहदा अहमियत का हामिल है और बैन अल-अक़वामी बहाव को बढ़ाने के लिए बशमूल सरकारी तरक्याती इमदाद 2025 तक हर साल कम अज़ कम $20 बिलियन और 2030 तक हर साल कम अज़ कम $30 बिलियन। ये अज़्म पिछले फ्रेमवर्क के मुकाबले में फंड्स में 3 गुना इजाफे की नुमाइंदगी करता है। ये भी अहम है कि बैन अल-अक़वामी मालियाती बहाव तरक्की याफ्ता ममालिक और रियासतों से आएगा जो रज़ाकाराना तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक की जमातों की जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं। GBF के रिसोर्स मोबिलाइजेशन के फैसले में मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा भी शामिल है, जिसमें MDBs और IFIs को दावतनामा भी शामिल है कि वो अपने पोर्टफोलियोज और माली बहाव को कन्वेंशन और GBF के साथ 2030 तक सीध में लाएं ताकि हयातियाती तनव्वुर के लिए फिनांस में इजाफा किया जा सके और नए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड के साथ शराकत दारी पर गौर किया जा सके।
ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के तहत इस नए फंड को तख्लीक करने का मुआहदा गुरूब आफ्ताब की शिक से मशरूत होगा और 2030 में ख़त्म हो जाएगा, जब तक कि कन्वेंशन के फरीक़ैन मुस्तक़बिल में CBD की मदद के लिए एक नए स्टैंड अकेले फंड की ज़रूरत पर तबादला ख्याल करने के लिए जगह पैदा करने पर इत्तेफाक न करें। विजन और मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए 2030 के एक्शन अहदाफ के तहत अहम अहदाफ के हुसूल के लिए फ़ाल तौर पर काम करना ज़रूरी होगा। इनमें मकामी मनसूबा बंदी, माहौलियाती निज़ाम की बहाली, 30% ज़मीनी माहौलियाती निज़ाम और 30% समंदरी माहौल का तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हौसला अफजाई के ख़ात्मे के ख़तरात को रोकना, हयातियाती तनव्वो पर आबोहवा की तब्दीली के असरात को कम करना और हयातियाती तनव्वो के लिए नुकसानदेह तरग़ीबात और सब्सिडियों को ख़त्म करना उनमें इस्लाहात शामिल हैं। मुआहदे के नफाज और निगरानी के फ्रेमवर्क ने उन इक़दामात के लिए एक टाइम टेबल मुरत्तब किया है जिसमें कौमी हयातियाती तनव्वो की हिकमत अमली और एक्शन प्लान के लिए अहदाफ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत होती है, और एक COP 16 के ज़रिया मियारी टेम्पलेट्स के साथ कौमी अहदाफ का तयन करना। 2. कौमी रिपोर्ट 2026-2029 पेश करना। COP 17 और COP 19 में इज्तिमाई पेशरफ्त का आलमी जायज़ा लेना। 4. आलमी पेशरफ्त का जायज़ा लेने के बाद ममालिक की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर इजाफ़ा करना। पाकिस्तान के लिए यह ज़रूरी है कि वो कौमी हयातियाती तनव्वो की हिकमत अमलियों, एक्शन प्लान्स और वादों को COP 16 से कबल GBF की ज़रूरियात से हम आहंग करे। हुकूमत को GBF के नफाज के लिए कवानीन को अपनाने के लिए घरेलू सतह पर भी फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। अमल दरामद की मनसूबा बंदी में हदफ 15 को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई शामिल होनी चाहिए, जिसमें कानूनी, इंतज़ामिया पॉलिसी इक़दामात की ज़रूरत होती है ताकि कारोबारी इदारों को अपने ख़तरात, इन्हिसार और फितरत पर पड़ने वाले असरात को ज़ाहिर करने के लिए हौसला अफजाई अहल बनाया जा सके। एक कौमी बायोडाइवर्सिटी फिनांस प्लान तैयार करना जो हुकूमत को GBF के नफाज की हिमायत करने के लिए वसाइल को मुतहर्रिक करने के काबिल बनाता है और साथ ही फितरत से मुताल्लिक इंकिशाफात पर मियारी तरतीब देने वाले इदारों के लिए इक़दामात और GBF के नताइज के साथ काम को सीध में लाने के लिए मुंतकिली के मंसूबों में मदद मिलेगी। अगरचे COP 15 के नताइज एक अच्छा अमल दरामद फ्रेमवर्क और आईची से एक कदम आगे फराहम करते हैं, लेकिन बहुत कुछ मुस्तकिल सियासी तवज्जो और वसाइल को मुतहर्रिक करने पर मुनहसर होगा। COP 15 के नताइज को COP 28 में ज़म करना और सालाना CBD इजलासों के इनेकाद से पेरिस मुआहदे पर तरसील में इजाफा हो सकता है। मज़मून निगार सिविल सोसाइटी कोलेशन फॉर क्लाइमेट चेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अखज़ शुदा बतारीख 01 जनवरी 2023। For more videos, subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.